it up. Okay. Charanji, welcome everyone. So we have a nice small group, which is a good thing at times, especially when we have a little bit of open-ended discussion involved. So I'll go ahead and share my screen, or I quickly put together some slides. So please excuse the aesthetic value is pretty low. I just used the default white background and I filled in the details that I thought were necessary. तो थोड़ा सा मैं जो है वो यूएस में जो स्टाफ ऑगमेंटेशन का बिजनेस है, I'm going to give an overview of that as well. उसमें जो challenges हैं, cover those, and obviously those challenges are the ones that are going to give you a leg up if you're trying to get into this business or trying to talk to the clients about it. और so about 20-30 minute का ये overview हो जाएगा, conversation हो जाएगा, and then we'll stop the recording and we'll jump into the specifics of Dentsu requirements, and I'll walk you through कि उसमें उधर हमें क्या चाहिए या वहाँ क्या किया जा सकता है. So let me just give like a quick overview कि why am I able to talk about the staffing business. I've never run staffing business. I've never been part of staffing business in any shape or form. लेकिन from 2016 to 2020, I worked for the second largest staffing firm. It's called Allegis Group. तो Allegis Group क्योंकि holding company है, parent company है, तो normally लोगों को उसका नहीं नाम पता होता, लेकिन I'm sure most of you have heard of Tech Systems or Aerotech. So they operate under these brands. So Allegis Group itself is like a 13-14 billion dollar company. Tech Systems is probably $3 billion and Aerotech is about $5 billion. तो टेक सिस्टम्स जो है ये सिर्फ आईटी की स्टाफिंग, स्टाफ ऑग सर्विसेज, रिक्रूटमेंट इसमें काम करती है, और एरोटेक जो है वो इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और दूसरे दे स्टार्टेड विद providing airline services and air equipment servicing on the ground to airports and the aviation industry. तो उधर से ये शुरू हुए थे, तो इनका Aerotech, that's why the word aero. Anyway, तो इन्होंने मुझे 2016 में they hired me to, they wanted to transform the entire recruitment and staffing business using big data analytics and AI. So that's what I ended up doing over there. तो I got front row seat into understanding कि ये business है क्या, कैसे चलता है, इसमें challenges कहाँ पे हैं, और फिर I built, there was a 70+ team जो मेरे अंडर थी, उनको यूज करते हुए जो है ना हमने different pricing systems, search systems, text mining, whole bunch of things we created for them and kind of rebuild their entire data and analytics strategy. So that gave me a lot of insight into कि ये staffing का business actually काम करता कैसे है और इसमें challenges किधर हैं. और फिर उधर से ही मैंने I pitched them an idea which they passed. They initially said they will invest, but then they passed. So I've been working on my own. So what I'm doing right now is kind of building a career guidance का AI engine और career score, जैसे credit score होता है उस तरह का बना रहा हूँ. Similarly एक जो search systems हैं resume के candidates के वो बहुत weak हैं based on what I've seen in the market. So I'm kind of building a next generation search system. और फिर salary और package की जो negotiation है that's also a problem. So I'm building a bot for that. और उसके बाद idea is कि candidate preference based job search होनी चाहिए, ना कि employer based. तो candidate कहे कि यार मुझे एक job चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, and then the tool goes out and finds that specific job and negotiates the package on behalf of the candidate. That's the idea that I'm working on as my startup. तो ये थोड़ा सा background देने का मकसद सिर्फ ये था कि I am actually well versed with how this industry functions, or so then I can actually walk everyone through what the staffing business is, and then we can go specifics into the Dentsu. Make sense? Anybody has any questions, concerns here? Okay, तो basically staff augmentation का जो business है, वो basically it's about hiring contingent or temp labor for a fixed term. और usually होता यही है कि कोई specific project होगा, उसके लिए वो उनको manpower चाहिए, जो project के खत्म होने पर उनकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी. तो that's where they mostly bring it in. It's usually funded by capex, and they get the project done and then release the people. तो उनको जो है, और they don't want any employment liability
कोई बेनिफिट्स नहीं, कोई लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं, वो सारी चीजें किसी और का हेडेक है, और फिक्स बिल रेट के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, कोई बेनिफिट उनको नहीं दिए जाते। और बेसिकली हाउ यू मेक मनी ऑन दिस एज अ फर्म, एज अ वेंडर, इज के क्लाइंट आपको बिल रेट एक देता है और आप कैंडिडेट को एक पे रेट देते हैं, और बीच में आप अपना कट जो है वो बना लेते हैं। तो क्लाइंट ने अगर $80 आपको दिया है जावा डेवलपर का, तो आपने उसको $65 दिया है, तो $15 बीच में आपके बन रहे हैं एवरी आवर दैट इंडिविजुअल इज वर्किंग ओवर देयर। तो आईटी sector overall, engineering, healthcare, they are big users of white collar staff augmentation, और transportation, warehousing, construction, they are big in blue collar staff augmentation. तो दोनों की अपनी अपनी थोड़ी सी डायनामिक्स में फर्क है। ब्लू कॉलर वाले में सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग, स्टेट अप्रूवल्स, इस किस्म की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और काम थोड़ा एड हॉक होता है, उनको 2 दिन के लिए बंदा चाहिए, या सो इट्स नॉट लाइक अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट। लेकिन जो व्हाइट कॉलर वाली ये वाली अरेंजमेंट होती है, ये 3 to 6 मंथ तो ऑन एवरेज होती है, कैन गो अप टू अ ईयर। सो पोटेंशियल इसमें क्या है इस बिजनेस के अंदर? व्हेन आई वर्क फॉर ऑब्वियसली अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, आई काइंड ऑफ सॉ कि हाउ मनी इज मेड एंड हाउ फ्री मनी इज मेड। सो अगर आप 5 वर्कर्स प्लेस कर देते हैं एक लार्ज कॉर्पोरेशन में, तो आपने $80 एन आवर पे रफली वो 5 डेवलपर, डिजाइनर, एनालिस्ट जो भी हैं वो आपने प्लेस किए हैं, और आप उनको रफली $65 एन आवर दे रहे हैं। तो आपका 3 मंथ में जो प्रॉफिट है ना, वो $50,000 है, मार्जिन जो है। तो दैट इज एक्चुअली कंसिडरेबल जस्ट बाय हैविंग 5 पीपल वर्किंग ओवर देयर, एंड एज दे आर वर्किंग ओवर देयर यू डोंट हैव अ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एज सच, इसलिए कि वो उधर काम करते जा रहे हैं और वो आपको पैसे बना के दिए जा रहे हैं। तो उनको उधर पहुंचाना जो है वो दैट टेक्स सम एफर्ट एंड सम कॉस्ट, बट देन फ्रॉम देयर ऑन यू आर जस्ट मेकिंग मनी ऑफ their hours. If they end up working 2 years over there, then you've made a lot of money on their behalf. आपने almost $60,000 2 year में उस एक बंदे के ऊपर आपने बना लिए हैं। So the upside is actually significant. It's much higher than a multi-million dollar services project, if you are able to place people, and that is why this business is big. और फेडरल या डिफेंस के अंदर दिस इज फ्रॉम अ स्पेसिफिक केस, $350 एन आवर हेलीकॉप्टर पायलट के अफगानिस्तान की प्लेसमेंट के लिए वो दे रहे थे। तो वो मेरा एक दोस्त है डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हियर इन द वाशिंगटन डीसी एरिया, उसने जो है वो $200 एन आवर पे उसने बंदा लगा दिया। तो लुक एट दिस पे आउट, आई मीन लाइक जस्ट इन 1 week this is what you are making, because your margin is $150 an hour here. तो खैर, but basically this is a good business, but I will walk through some of the challenges that this business has, and most staffing firms are not addressing those. So if you want to jump in, or if you want to transform using some of the ideas, then you have a leg up. अच्छा जी, process होता किस तरह है कि there is a job rec that is created. This is created by the employer, large client भी हो सकते हैं, federal government, non-profit, anybody, and then this goes on to the job boards, and then from there candidates are applying for those jobs, या एक आपका पास existing अगर database है तो उसमें से आपने ढूंढ लिए against that job कि भाई कौन सा बंदा है, and we'll talk about this in a little bit more detail. फिर उसकी प्री स्क्रीनिंग होती है। जब प्री स्क्रीनिंग से आप सिलेक्ट कर लेते हैं 5-6, तो आप वो क्लाइंट के हवाले कर देते हैं। क्लाइंट उनको इंटरव्यू करता है और उसमें से वो 1 या 2 जितने भी उसको चाहिए वो सिलेक्ट कर लेता है। देन गोज थ्रू द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। फ्रॉम देयर नाउ द कैंडिडेट इज स्टार्टिंग टू वर्क फॉर द क्लाइंट आफ्टर द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, and then they submit time cards. So every week, end of the week, they submit time cards. वो क्लाइंट भी अप्रूवल करेगा उसका, आपका भी इंटरनल रिव्यू प्रोसेस हो सकता है, एंड वंस यू अप्रूव इट तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर को सैलरी देनी है और एम्प्लॉयर को आपने इनवॉइस कर देना है फॉर द सेम नंबर ऑफ आवर्स ऑन द अग्रीड अपॉन रेट। तो ये जो 9 बॉक्सेस हैं, दिस बेसिकली सम्स अप द स्टाफिंग बिजनेस। एनी क्वेश्चंस thus far? Okay,
So then we will jump into इसमें एक चीज नुमान भाई I wanted to add is कि because we hire a lot of people from staff augmentation too, they go through us as well. Depends, totally depends. आप time cards आपने लिखा हुआ है, लेकिन sometimes it's just like an monthly rate for a contractor. So it doesn't necessarily, we don't necessarily need time cards, just as long as they are, we have agreed that we'll pay a certain amount per individual per month as well. So maybe like I think generally on paper this is fine, but I'm just saying there's some other models as well where you just agree saying, oh, I'll pay $9,000 per employee per month, and that's how we pay to our approved vendor as well. ठीक है. So I can come back to that. I mean, obviously there are variations. This is more of a generic overview. There is a whole different side of business that is covered under that approach. Actually, we can talk about that if needed. So job rec किधर से आती है? This is what starts the entire activity. So होता ये है, most companies, all of you have been working for large corporations in the past, have worked for. तो आमतौर पे कोई planning and budgeting होती है, और उसके जरिए प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं, और जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो देते हैं तो फिर उसकी मैन पावर और स्किल नीड्स जो हैं वो फाइनलाइज की जाती हैं. सो वंस अ प्रोजेक्ट इज फंडेड, then you go and okay, now I need manpower to go execute that. अगर आपने क्लाउड पे माइग्रेशन करनी है, या आपने कोई लेगेसी सिस्टम निकाल के नया सिस्टम लगाना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेचर है, वो अप्रूव होगा, तो फिर आप जो है वो यू कैन फाइनलाइज द मैन पावर एंड स्किल नीड्स. तो उसके बेस पे जॉब रैक क्रिएट करता है एम्प्लॉयर, और उसमें वो उसकी predefined rate or W2 versus 1099. So this is US terminology. I'm sure there is an equivalent in Canada. W2 means that you are a salaried employee and with benefits, and then 1099 benefits as well as taxes and everything. The employer is responsible for those. 1099 is where it's another 1099 or corp to corp actually. That's another term which is used extensively in this space. To corp जो है, इसमें वो इंडिविजुअल को नहीं पे कर रहे होते, वो इंडिविजुअल की छोटी सी कंपनी को पे कर रहे होते हैं. तो ये यहाँ पर वो जॉब रैक जो है ना, वो डिफाइन कर देती है कि whether they will accept 1099 corp to corp or they will only accept W2s, but the rate is predefined. Sometimes W2 rates are different from 1099, क्योंकि W2 में benefits और कुछ दूसरी services included होती हैं, तो rate थोड़ा कम होता है. 1099 में रेट थोड़ा हायर होता है, लेकिन फिर जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है वो सारी चीजों को टेक केयर करने की. तो एम्प्लॉयर की इन सारी सिचुएशन में जॉब रैक क्रिएशन के अंदर उसकी 3 प्रायोरिटीज ही हैं. एवरीबॉडी वांट्स द बेस्ट स्किल्ड लेबर, एवरीबॉडी वांट्स दैट लेबर at the cheapest rate, and they don't want them to leave. Somebody leaving in the middle of the project is a serious headache for the employer, and it's a headache for the vendor who's supplying the labor. So then internal HR, vendor management, and third parties involved in fulfilling. So vendor management, we'll talk about this. This is a well-established and well-defined process within large companies, how they manage this. And this is where you become an approved vendor, and then you have some preferential treatment in terms of getting more business from the client. So this is where the staff augmentation business starts basically. तो ये उसका background है कि jobs आती कहाँ से. Then what happens is that you have to job boards play a role. तो इसमें HR systems जो हैं, जब आपने job rec create कर दी, तो उनकी भी subscriptions होती हैं job boards के साथ. तो employer खुद भी वो positions जो है. Can we please mute? Someone is talking in the background. Please mute yourself. Can mute everyone. Yes. Yeah, they might have walked away from the machine, which is why they're. Oh, okay. नहीं, but ठीक है, I've muted everyone. You can unmute yourself if you want to say something. That's fine. All right. तो so HR system जहाँ पे वो job rec create की जाती है, उधर से directly भी job boards को posting चली जाती हैं. Bullhorn is a very well established service that does that.
तो करियर बिल्डर, डाइस, मॉन्स्टर, वो उन सबको ऑटोमेटिक आपकी जॉब पोस्टिंग कर देता है. जो आपके अप्रूव वेंडर्स हैं, दे ऑल्सो रिसीव द जॉब रैक्स विद द सैलरी रेंज विच इज अप्रूव फॉर दैट, जो बजट है उसका, एंड दिस इज कॉल्ड द VMS. तो VMS सिस्टम्स के साथ आपने अगर हुकअप किया हुआ होता है, तो these are also services. SAP has one, Oracle has one. तो अगर वो आपका VMS है, तो you will automatically receive the job rec directly from your client. Now the vendors, the suppliers, staff augmentation companies, they can also post on job boards. अगर उनके client ने उनसे कोई skill set मांगा है, data architect वो मांग रहे हैं, तो they can also create, cut and paste the entire job rec and create their own job posting and post it on a job board and get candidates that way. तो जो जॉब बोर्ड्स हैं, वो जितने लोग भी अप्लाई करते हैं उस पोस्टिंग के अगेंस्ट, वो ऑटोमेटिकली वो आपको पोस्टिंग के अगेंस्ट पास ऑन कर देता है. और जॉब बोर्ड्स के अंदर लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स हैं डिफरेंट, तो आप उसमें सर्च भी कर सकते हैं कैंडिडेट्स को उनके अपने डेटाबेस में. इंडीड है या मॉन्स्टर है, उनकी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं. लिंक्डइन भी करता है ये. इट लेट्स यू एक्चुअली सर्च द डेटाबेस फॉर द स्पेसिफिक स्किल्स यू आर लुकिंग फॉर. और वेंडर्स, जो बड़े वेंडर्स हैं, जैसे अलीजिस ग्रुप के पास ऑलमोस्ट 40 मिलियन रेजुमेज का डेटाबेस उनका इंटरनल है. तो वो सबसे पहले अपने इंटरनल रेजुमे डेटाबेस में देखते हैं बिफोर दे गो एंड पोस्ट समथिंग आउटसाइड. Obviously there is a cost of posting it on the job board or searching on the job board databases. And then there is another flavor of this कि ये सारी जो छह स्टेप्स हैं, ये पूरे के पूरे जो हैं आपने आउटसोर्स कर दिए हैं एक सर्विसेज फर्म को. तो ये they are doing all of this on your behalf. So they are managing the vendors, they are managing your HR system, they are managing your job recs. So that is also a business. 4-5 बड़ी firms हैं जो ये पूरा process outsource उन्होंने किया हुआ होता है. Alright, so net effect इस सारी activity का क्या है कि there is a pool of relevant candidates that becomes in your scope, जो कि इस job rec के against है. Just a interesting stat here कि 14% of IT workforce जो है ना, वो regularly apply करती है, या उनका जो resume है वो up to date होता है और वो apply कर रहे होते हैं. बाकी जो 86% है ना, that's called hidden talent, and that's the holy grail within IT. If you can somehow get to the people who are hiding from the recruiters, that's the best talent, that's the most profitable talent. But there is no easy way to get to them. तो आप अपने नेटवर्क के जरिए या अगर अपनी रिसोर्सेज के जरिए, if you can tap into that, that is within this industry, that is considered holy grail, if you can somehow tap the hidden talent. Okay, then after the job board there is a pre-screening. तो जो सबसे बेसिक प्री स्क्रीनिंग होती है वो तो कीवर्ड बेस्ड होती है. आपने कीवर्ड डाला जो जॉब रैक का है, उसके अगेंस्ट 10-12 रेज्यूमे आ गए, आपने कहा जी बस ये हो गए, यही 10-12 हैं, इसी पे मैं आगे काम करूँ. तो वो प्री स्क्रीनिंग जो है वो सिर्फ कीवर्ड पे चल रही है. कुछ स्टाफिंग फर्म्स जो हैं वो एक्चुअली रेज्यूमे रिव्यू करती हैं, उनको जॉब रिक्विजिशन की समझ होती है, तो दे कैन एक्चुअली रिव्यू द रेज्यूमे एंड फिगर आउट कि इज देयर इज अ गुड मैच और नॉट. Then a lot of you, I'm sure, as professionals also receive, there is always these emails coming from recruiters who are pitching different jobs and asking for your interest. At that point, अगर किसी भी तरह से उन्होंने कैंडिडेट को कांटेक्ट किया है, अगर कैंडिडेट इंटरेस्ट शो कर देता है, तो फिर there needs to be an agreement on rate, क्योंकि वेंडर को पता है कि क्लाइंट क्या रेट मांग रहा है, तो वो आगे कितना रेट दे सकता है, उसके पास कितनी ब्रीदिंग रूम है, उसमें कुछ नेगोशिएशन की गुंजाइश होती है. तो दे आर नॉर्मली, दैट्स द फर्स्ट थिंग दे गेट आउट ऑफ द वे. फिर वो दे कैन ऑल्सो समटाइम्स फॉर्मली और इनफॉर्मली कंफर्म कि जी आपके पास ये स्किल्स हैं कि नहीं है, एंड देन आर यू अवेलेबल, व्हेन कैन यू स्टार्ट, एंड ऑल ऑफ दैट. तो दैट्स काइंड ऑफ द प्री स्क्रीनिंग एक्टिविटी. Actual vendor screening is a little bit rare, but it does happen and it's considered good, which basically means कि अगर आप data architect apply के लिए बंदा कोई ढूंढ रहे हैं, तो आपके अपने staff में कोई data architect है
जो कि कैंडिडेट को रिव्यू कर सकता है और उसको प्री स्क्रीन कर सकता है एक इनिशियल इंटरव्यू के थ्रू, एंड ओनली देन यू हैंड दैट कैंडिडेट ओवर टू द क्लाइंट वंस योर इंटरनल पीपल अप्रूव कि हाँ यार ये आदमी ठीक है. तो मोस्ट स्टाफिंग फर्म्स के लिए दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज समटाइम्स दे गेट रिक्वेस्ट फॉर टेस्टर, एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, data developers, mobile developers, so it's very unlikely कि उनके पास सारी skill के लोग हों जो screen कर सकें, technically evaluate कर सकें. So that's where they this is rare, but it's actually appreciated by the client a lot. And then hiring manager जो है उसको 2 या 3-4 लोग भेजे जाते हैं HR के थ्रू या directly hiring manager को, who's like a manager or a director in a big company. तो वो उसमें से जो है 1 या 2 निकाल लेता है, कहता है कि चलो ये 2 को मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ. तो then the vendor has to coordinate the interview. और इसके अंदर as I'm saying this, rife with fraud, ये पहले भी होता था, लेकिन अब जब कि सारा कुछ रिमोट वर्क पे चला गया है, there is a lot of fraud happening here when someone else does the interview and someone else shows up for work. And they don't turn on their cameras, so you don't know who's behind the phone on a conference call. And normally after a few weeks you start to suspect, यार ये तो वो आदमी नहीं है जिसने इंटरव्यू किया था, उसको तो ये चीजें आती थी, ये जो आदमी काम कर रहा है इसको तो ये चीजें नहीं आती हैं. So there is a lot of hanky panky going on with remote work these days. Okay, so now client interview हो गया, वो Zoom call के through हुआ. Sometimes they give you a test to take and they also ask for your Git samples. आपकी Git directory में अपना कोड दिखाएं जो आपने लिखा है, तो you go through those type of things. Technical interview लाजमी होता है entry to mid level का. Increasingly what I'm seeing is कि एक psychological profile और एक soft skills का जो है ना, senior architect या manager, director level positions जो हैं, नॉर्मली वो स्टाफ ऑर्ग में आती नहीं है, वो ट्रेडिशनल हायरिंग में फुल टाइम हायरिंग के अंदर आती हैं, लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स दैट आर पॉपिंग अप नाउ दैट क्लाइंट्स आर एम्प्लॉयर्स आर एंटरटेनिंग. इस प्रोसेस से गुजरने के बाद क्लाइंट कहते हैं हाँ जी ठीक है, मुझे बंदा पसंद है, ये गो हेड, और वो कहता है इसको अब आप ले आए. अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आप के पास अप्लाई कर रहे हैं वो दूसरी जगहों पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो और वो नॉर्मली जो क्राउड कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेस में ऑपरेट करता है वो डॉलर्स एंड सेंट्स पे चल रहा होता है. तो अगर उसको कहीं से $5 की बेहतर ऑफर आ जाएगी, वो चला जाएगा छोड़ के, वो आपके प्रोसेस को बीच में अबैंडन करके किसी और के पास जॉब ले लेगा. तो अलॉट ऑफ टाइम्स अगर इस प्रोसेस में क्लाइंट गो अहेड तक पहुंचने में आपको महीना लग गया है, तो इट्स वेरी लाइकली कि उसने कोई और जॉब पकड़ ली होगी. अब क्लाइंट ने उसको इंटरव्यू कर लिया है, क्लाइंट कहता है हाँ जी मुझे ये बंदा पसंद है, बट नाउ व्हेन यू गो आफ्टर दैट इंडिविजुअल, वो कहता है जी मैंने तो और जॉब कोई पकड़ ली है. अब आप उसको $20 एन आवर एक्स्ट्रा दें तो वो आ जाएगा आपके पास, वरना you've lost that candidate. So you can understand the frustration that you go through, that if this takes a few weeks, this process up till here, and you've lost the candidate during, and you can't really blame them. अगर वो desperately job ढूंढ रहे हैं, उनका contract खत्म हो रहा है, तो they will take the first job which is available to them. वो आपका इंतजार तो नहीं करेंगे. So this is where there is a big frustration with the vendor performance as far as employers are concerned, कि वो जब बंदा select कर लेते हैं तो आगे से वो आता है कि नहीं जी वो तो अब available नहीं. So big challenge that if somehow can be surmounted, that'll be great. All right, now the onboarding process kicks in. So the onboarding process, first of all, they have to confirm your work authorization, a legal requirement hai, they have to ensure that. They may go through background and criminal check. There are services that offer background and criminal check. They search, मेरा ख्याल है $225 लेते हैं, the one that I have used in the past, and they do all 50 state criminal databases, so they do that. Education verification वगैरह भी कर देते हैं. Then you need some financial details for the payroll setup, like tax deductions और वो सारी चीजें setup करने के लिए. There may be a drug screen involved. This is usually if the client requires it, then you have to get the candidate through this. There is obviously different kinds of liability insurance that the client expects you to have, क्योंकि आपका बंदा उनके facility में काम कर रहा है, अगर वो कुछ उल्टी हरकत करता है या कोई accident हो जाता है, तो you are liable. So they require you to have the liability insurance.
Then obviously all of these details are worked out in a contract between the client and the vendor, जिसमें rate, invoicing का schedule और total duration उस contract की वो सारी जो है work out कर ली जाती हैं. तो a lot of times there is a concept called MSA. It's a master service agreement. तो अगर आप multiple बंदे provide कर रहे हैं तो आप एक MSA sign कर लेते हैं जो कि एक overarching contractual arrangement होता है जो इस किस्म की details को cover कर रहा होता है. और फिर उस MSA के अंडर आप सिर्फ फिर उस स्पेसिफिक कैंडिडेट और स्पेसिफिक जॉब रेक की ही डिटेल वर्कआउट करते हैं. तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स मच स्मॉलर. इट्स ओनली फॉर दैट नेम्ड इंडिविजुअल जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं और उसका रेट क्या है. और बाकी जो दूसरी कंटिजेंसीज होती हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वो MSA ओवरआर्चिंग उसको कवर कर रहा होता है. So that's another way of setting that relationship up with a client. And then also you need a contract between the vendor and the candidate कि भाई उसको कितने पैसे मिलेंगे, वो उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी ऑब्लिगेशन क्या है, उसने काम प्रॉपरली करना है, अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा या वो कोई बदतमीजी करेगा, सेक्सुअल हरासमेंट, इस किस्म की चीजें हैं क्लाइंट साइड पे, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है वो while he is on the client side. So you got to have some kind of protection ताकि लाइबिलिटी को प्रॉपरली असेस किया जा सके. तो बिटवीन वेंडर एंड कैंडिडेट आल्सो अ डिटेल सम डिटेल कॉन्ट्रैक्ट what I'm the word I'm looking for. I mean anyway you get the idea कि you need some kind of details worked out. उसके बाद वेंडर का जो HR सिस्टम है उसमें आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि he becomes your employee or your so at least your email system, your calendar एज अ वेंडर आपकी उसके साथ इंटरनल कम्युनिकेशन भी तो होगी ना कोई. तो उसके लिए आपको किसी किस्म का एक HR सिस्टम, पेरोल सिस्टम और ये चीजें सेटअप करनी है. तो ही नीड्स टू बी ऑन इट. एंड देन ऑल्सो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको टिपिकली क्लाइंट HR सिस्टम में भी उसको जाना होता है क्योंकि वो नॉर्मली एक्टिव डायरेक्टरी HR सिस्टम से लिंक्ड होती है, उसमें एंट्री होती है. तो फिर एक्टिव डायरेक्टरी उसको पिकअप करता है, फिर आप उसकी ईमेल एड्रेस बनाते हैं, उसकी ID जनरेट करते हैं और लॉग इन क्रेडेंशियल्स और ये सारी चीजें जो है ना वो आमतौर पे HR सिस्टम के साथ टाइड अप होती हैं. तो यू हैव टू देन गेट दैट कैंडिडेट सेट अप ऑन द क्लाइंट HR सिस्टम. सो दिस इज कॉल्ड द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. ऑलराइट, देन ऑब्वियसली देयर इज दिस टाइम कार्ड. तो वीकली टाइम कार्ड उसने सबमिट करना है वेंडर सिस्टम के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर और क्लाइंट सिस्टम के ऊपर. अब बाज़ औक़ात नहीं होता, क्लाइंट के पास नहीं है अगर सिस्टम या आपके पास नहीं है तो एक्सेल शीट्स बैक एंड फोर्थ ईमेल्स पे आ रही जा रही होती हैं एंड दैट इज ओके, यू कैन लिव विद दैट. लेकिन जब आपका जरा सा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाए तो इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड. और क्लाइंट का जो हायरिंग साइट का जो हायरिंग मैनेजर है जो उसको सुपरवाइज कर रहा है उस इंडिविजुअल को, उसको अप्रूवल करना पड़ता है. और दिस हैज टू बी टाइमली क्योंकि यू हैव टू पे हिम. और फिर आप आवर्स रेकंसाइल कर लेते हैं, उसमें PTO, ट्रेनिंग, हॉलीडेज, ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है कि उसने किधर आवर्स बुक किए हैं और किसके उसको पैसे मिलने हैं, किसके आपने इनवॉइस करने हैं और किसके आपने अपनी जेब से देने हैं. लॉट ऑफ टाइम में भी यू आर गेटिंग हिम ट्रेन्ड, so that money is going to come out of your pocket and not from the client. तो इस चीज को properly handle करना, hours reconciliation is at times becomes tricky. Once that is done, तो paycheck to the candidate, so you have to send him money. Normally 2 weeks out होता है time submission से, लेकिन जो आप invoice करते हैं वही hours client को, that normally could be 30 to 60 days out. तो there are some cash flow challenges that you need to be aware of. अगर 2 या 3 लोग आपके काम कर रहे हैं तो आपको उनको अपनी जेब से तनख्वाह देनी पड़ेगी और क्लाइंट से आपको पैसे बाद में आएंगे. तो you need to be aware of that. Some low-end staffing firms, they really exploit the candidate and they कि भाई जब हमें पैसे मिलेंगे तब हम तुम्हें भी पैसे देंगे, which is actually illegal. लेकिन they are usually squeezing the employees for whatever reason. अगर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसको नॉर्मल जॉब नहीं मिल रही है, उसका इमिग्रेशन का इशू है, जो भी है, sometimes in those situations this happens. So that is it. So let me pull back the original diagram. Let's ask questions and any other discussions and any other things that are relevant to this entire process that I've just covered. So Numan bhai, इसमें थोड़ा सा एक अनरिलेटेड क्वेश्चन है, बट एक जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है बड़े वेंडर्स में, समटाइम्स जो एक
देखे गए इंडस्ट्री में किकबैक का कॉन्सेप्ट है, नॉट एवरीवेयर बट सम प्लेसेस है वो, तो उसमें लीगल और क्या एथिकल उसकी implication है? So I have, agar aap, so the scenario that you're talking about that I'm well familiar with, maybe that's what I'm understanding. So what happens is a lot of times जो जैसे hiring manager है, उसके अंडर अगर काफी सारी positions regularly open हो रही हैं, तो they may go to one of their friends who has a staffing company or who works at a staffing company. वो कहते हैं यार तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लड़कों को, तुम्हारे कैंडिडेट्स को रखवा दूंगा, लेकिन ये कि मेरी बीवी को कट देना है. तो so these things do happen, and I have just recently second largest insurance company in the US, right? The CIO has been fired because of this. So a lot of times vendor kickbacks do happen, but if you are caught, then the vendor is also blacklisted and kicked out, as well as the executive that they were doing the hanky panky with. Lekin it is actually very common where you hiring manager gives you a preferred rate. अगर hiring manager के पास rate की range है budget के मुताबिक $80 to $110 an hour, right? तो वो आपके बंदे को 110 दे देगा और कहेगा कि इसमें से $10 an hour जो है ना मेरा कट है. तो these things do happen. तो हमने actually जो Allegis में जब मैं काम कर रहा था, तो there is a process and there is a mitigating approach to make sure कि कोई sales वाला या account manager जो है अपने तौर पे, it's not necessary कि the entire staffing firm is corrupt and doing this. Maybe one of their account managers who handles GM and Toyota and some other large accounts, maybe that account manager works something out like that कि यार मेरा बंदा रख लो और मैं जो है ना वो तुम्हें कोई इसके बदले में kickback दे दूंगा. तो that does happen. And that is illegal, and there needs to be provisions to make sure that there is no hanky-panky going on. नुमान भाई, ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और यहाँ पे एक और मैं इशू रेज करना चाह रहा हूँ. वो ये होता है कि बिफोर क्रिएटिंग द रैक, वो हायरिंग मैनेजर की ना वेंडर साइड से किसी अकाउंट मैनेजर के साथ सेटिंग होती है. तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि बिफोर क्रिएटिंग अ रैक ऑन दी जॉब पोर्टल, वो बंदे का पहले इंटरव्यू करवा देते हैं, और अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर रैक क्रिएट करने के बाद उसको रिज्यूमे वहाँ पे सबमिट करके पोजीशन को फौरन क्लोज कर लेते हैं, ताकि वीएमएस में जो दूसरे वेंडर्स है ना, वो फौरन से कैंडिडेट्स की प्रोफाइल को सबमिट ना कर सके, राइट? सो होता ही है कि आपके पास एक वीएमएस सिस्टम होता है. So let me good point. Let me explain that a little bit. So what is happening here, that as the client is trying to figure out their planning and budgeting, तो वहां पे जो डायरेक्टर या वीपी है जो रिस्पॉन्सिबल है उस डिपार्टमेंट का या उस बजट का, अगर उसके साथ हायरिंग वेंडर की स्टाफ ऑग वेंडर की अच्छी रिलेशनशिप है, तो वो इस स्टेज पे ही बता देता है कि यार हम जो है ना अगले साल बजट करने जा रहे हैं, तकरीबन $3 मिलियन का होगा, हमने बजट सबमिट किया है और हमें जो है ना वो 12-15 लोग चाहिए होंगे, हम मेजर क्लाउड माइग्रेशन कर रहे हैं. तो वो ये जो हाई लेवल वाली इंफॉर्मेशन है, ये अगर वेंडर के पास पहले आ जाए तो वो ऑलरेडी कैंडिडेट्स लाइन अप करना शुरू कर देता है, लोगों को साइन अप करना शुरू कर देता है और अपनी फाइनल प्री स्क्रीन कैंडिडेट लिस्ट तैयार करके बैठा होता है, ताकि जैसे ही जॉब रैक हिट करे, तो जब जॉब रैक हिट करती है तो वो तो मल्टीपल वीएमएस को जाती है. आपके अगर 10-12 अप्रूव्ड वेंडर हैं, वो सबको एक टाइम पे जॉब रैक पहुंचेगी. लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बंदे लाइन अप किए हुए हैं, तो यू मे बी एबल टू गो थ्रू द प्रोसेस faster. That is the legitimate way of doing business, where the account managers are trying to get before, they are trying to get ahead of the planning and budgeting and trying to make sure. So for example, जैसे Towers Watson is a company, वो a lot of times या Price Waterhouse भी हैं, Deloitte भी हैं. What they do is they help companies with the planning and budgeting. So they are the consulting firm engaged to डिजाइन द स्ट्रैटेजी और उसके अंदर क्या हमने करना है, वो ऑलरेडी वहां मौजूद होते हैं. तो उन्होंने भी स्टाफिंग फर्म्स के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हुए होते हैं, वो उनको रेट भी बता देते हैं और वो उनको स्किल्स सेट जो रिक्वायर्ड होगा वो भी बता देते हैं और नंबर ऑफ बॉडीज भी बता देते हैं. तो ये गेम जो है ये बेसिकली अपना कैंडिडेट क्लाइंट के सामने जो पहले पहुंचा दे अपना क्वालिफाइड कैंडिडेट, उसकी गाड़ी चल जाएगी.
अगर क्लाइंट ने ऑलरेडी किसी को पिक कर लिया है, अब आप बहुत ही हाई क्वालिफाइड बंदा भी ले आएंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो द legitimate way is for the staffing company to build the relationship at this level so that they know what's coming down the road and they can prepare for it beforehand. So that's, as I said, is the legitimate way of getting your leg up. जो दूसरा जुनैद ने भी बात की है, that also happens कि sometimes there is an industry term जो इस वक्त मेरे जहन से निकल रही है, there is an industry term for that. Sometimes it is known कि ये पोजीशन किसके लिए क्रिएट की जा रही है और आपने बंदा ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है. लॉट ऑफ टाइम्स दैट इज यूज्ड फॉर एन इंटरनल हायर. आपके पास इंटरनल कॉन्ट्रैक्टर था, उसको आप फुल टाइम बना रहे हैं, तो आपको पोजीशन तो ओपन करनी पड़ेगी, लेकिन आपने ऑलरेडी उसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है. तो a lot of times this also happens कि आपका प्रेफर्ड वेंडर जो है वो इस स्टेज पे अपना बंदा ऑलरेडी इंटरव्यू भी करा दे, और उसके बाद जैसे ही आपको बंदा पसंद आ जाए, आप जॉब रैक क्रिएट करें और फौरन ही उस बंदे को आप उस प्रोसेस के थ्रू गुजार दें. तो दैट स्पीड्स अप द गेम बेसिकली. तो क्लाइंट का तो इंटरेस्ट होता है कि एक्चुअली मे बी आई शुड पुट दैट इन हियर, बेस्ट स्किल्ड लेबर want the contractor ASAP. Everybody needs the guy immediately. तो जो सबसे पहले पहुंचा देगा, बेहतरीन स्किल्ड होगा, उसका लोएस्ट रेट होगा, वो that is preferred. और बीच में से छोड़ के जाना नहीं चाहिए. That creates a lot of bad blood between the vendor and the client. तो क्योंकि क्लाइंट कहता है कि यार तुम उसको पता नहीं आगे कितने पैसे दे रहे हो, या तुम उसको आगे तंग कर रहे हो, वो भाग जाता है, तो मेरा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है, तो I'm not going to work with you. So that is a big problem when the vendors are squeezing the candidate. The candidate may quit, and that quit has a problem for the employer. So employer after first couple of situations like this will stop working with you कि नहीं इसका बंदा नहीं लेना, क्योंकि ये जो है ना उनको भगा देता है. ठीक है जी. I'm actually gonna okay, let's finish the couple of questions and I'm gonna stop recording so we can jump into Dentsu. नुमान भी एक क्वेश्चन है. जी जी, आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही जी. अच्छा, वो क्वेश्चन ये है कि इसमें ना आपके पास जितने भी प्रेफर्ड वेंडर्स होते हैं, जो फर्स्ट ईयर वेंडर्स होते हैं, उनको वीएमएस का एक्सेस होता है, राइट? सो अगर किसी एक क्लाइंट का उनके पास एक SOW बेस्ड प्रोजेक्ट है, राइट, एंड दे आर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज विद इन यूएस एज वेल एज एट ऑफशोर, इंडिया में भी उनकी पूरी प्रॉपर टीम्स होती हैं. तो जब वो प्रोजेक्ट खत्म होता है और वो क्लियर हो जाता है, तो वीएमएस इटसेल्फ उनको एक दूसरा क्लाइंट दे देता है. तो मेरा जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी फर्स्ट ईयर वेंडर्स के साथ काम कर रहा हूँ ना, मैं पिछले 3 साल से स्टाफिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपने जितने भी प्रोसेस और स्टेप्स बताए ना, वो मुझे काफी सारी उन चीजों का आइडिया है ऑलरेडी. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वीएमएस सिस्टम में वो अगर एक SOW प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, तो वो इंटरनली एक और क्लाइंट जो है ना, वीएमएस उनको रेफर कर देता है. तो सवाल ये है कि अगर मैं वीएमएस सिस्टम में आना चाहता हूँ टू बिकम अ फर्स्ट ईयर वेंडर, तो उसका क्या प्रोसेस है? So let me explain this with a little bit of context. So approved vendor and preferred vendor are two terms. So if you are an approved vendor, you may get an email or you may get access to a certain feature of the HR system where there are open positions. If you are a preferred vendor, then you become part of the VMS. You subscribe to the VMS. Everything comes automatically to you. उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो कि प्रोजेक्ट टाइप भी होते हैं और कैंडिडेट इंडिविजुअल पोस्टिंग्स भी होती हैं. तो आमतौर पे प्रोसेस ये होता है कि जब आप अप्रूव्ड वेंडर होते हैं और आप रूटीनली अच्छे बंदे प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और आपके हायरिंग मैनेजर जिनको आपने बंदे प्रोवाइड किए हैं वो आपसे खुश हैं, तो यू वेट 6 to 8, 10, 12 months of that good quality service, and then you go to the VMS team, vendor management team के पास आप जाते हैं, and you put up your case कि we would like to become part of the VMS. Look at our track record, what we have done so far. We can go beyond that. और ये hiring managers की endorsement वो साथ लेके जाते हैं. तो you have to really lobby
the VMS vendor management team to approve you as a preferred vendor and get you into the VMS. So that's the evolutionary way of doing things कि आपने पहले एक बंदा सप्लाई किया एक मैनेजर को, उसको फिर दूसरा बंदा सप्लाई किया, अब वो आपसे खुश हो गया, वो आपके पास आ रहा है, अब आपने उससे बात करते हुए उसके पीयर को पकड़ा और उसके पीयर को भी आपने बंदे प्रोवाइड करने शुरू किए. तो दिस may take up to 2-3 years before you have that type of relationship at a big company where they know who you are and they know you bring in quality candidates. अब जो preferred vendor बैठा हुआ है ना, tier 1 वाला जो VMS में बैठा हुआ है, they don't want you in there. So what they do is they try to hide you or try to never reveal to the client कि actually बंदा आ कहाँ से रहा है. तो एक्चुअली बंदा tier 2 या tier 3 की फर्म से आ रहा है, लेकिन वो tier 1 वाले जो हैं वो क्लाइंट तक आपको एक्सेस नहीं दे रहे, आपको ना पता है कि हायरिंग मैनेजर कौन है, आपको ना पता है कि उधर फर्दर प्लानिंग और बजटिंग में किधर डायरेक्शन जा रहा है, आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है. यू कैन नेवर गेट आउट ऑफ द tier 3 और tier 2 स्टेट लाइक दैट. In order to get to the tier 1, you have to build a relationship with the hiring manager, build a relationship with the organization directly as an approved vendor first, and then you can move towards a tier 1 or a preferred vendor. ठीक है जी, थैंक यू जी. मैं उमर भाई की थोड़ी सा ऐड ऑन कर दूं विद नुमान भाई's consent. So वो जो नुमान भाई ने बात की, that is actually very true. So we hire from a lot of different vendors, like whether it be Geek Squad, our systems, anybody else. The उसमें approve vendor का process जो है वो आप वैसे तो definition same है, but there are certain things that come in compliance as well. When you're working with certain industry, whether it be financial industry or whatever, so जो organization होती है, they want to make sure that the approved vendor actually has all those processes on their side. So जो approved vendor का process है, it's normally a 2 to 2.5 month onboarding process, जिसमें you have to provide all the, जिस तरह आपका एक normal audit होता है, PCI का audit होता है या SOC का audit होता है, so you have to provide all the artifacts, that you have all the processes, you have all the, जिस तरह नुमान भाई ने कहा, liability insurances and everything, ताकि अगर आपका जो provided बंदा है, he does something in the organization, we as an organization are protected. Because जो हमें when we work with financial institutions, anybody else, हमें उनकी तरफ से requirement ये होती है कि आपने जो हम the processes that we expect from you, like regarding SOC processes, PCI processes, you have to make sure that your vendors actually comply with the same process. So हमें वो सारा as a pass through, we have to pass through उस सारा कुछ को pass through करना पड़ता है vendor के पास. नहीं तो अगर हम आप approved vendor नहीं हैं and we hire somebody directly from you, then we would consider that person as a contractor, and फिर हम उसको make sure करेंगे हम उसको as an employee treat करें. So there are certain, as we talked about earlier, there are certain permutations and combinations. तो approve vendor का इसलिए I've been trying to get some I know there are a couple of people not on the call. I've been trying to take them through that process right now. तो वो थोड़ा सा इसमें that is the process. So जो early stage companies होती हैं, they might not have all the processes. That's why it takes a certain time before they become an approved vendor. So let me just say something here. I'm gonna stop the recording.